Bismillahirrahmanirrahim. Our next topic is Neumann architecture. Typically, we have two types of CPU memory architecture. One is Neumann and one is Harvard architecture. So today we will talk about this. In the previous lecture, we study about the cache coherence problem and 4 different protocols. Okay, so what is computer architecture, or what is just architecture? The complex or carefully designed structure of something is called an architecture. And carefully designed structures of computer is called computer architecture, in which we study the different models and how does it function. It's called computer architecture. स्टोर प्रोग्राम डिफरेंट मॉडल्स है, इस तरह इनेक है और ईडी पिक है, और फिर ये ओड मॉडल्स है ये और ये। फिर 1945 में जॉन वॉन न्यूमन ने एक आर्किटेक्चर पेश किया जिसको हम वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर कहते हैं, which is our today's topic. In this architecture, memory contains two things: instruction as well as data. And one is processor which perform arithmetic and logic unit, and another one is controlling this. And he is John von Neumann, the who proposed this architecture. Okay, तो इसमें क्या होता है? CPU इसके मेन 4 पार्ट्स होते हैं. एक है CPU जो कंट्रोल यूनिट, ALU और रजिस्टर्स रखती है. One is input unit जो, and second one is memory. CPU memory में या तो डेटा सेव करती है या वहाँ से डेटा राइट करती है, and one is output. So this is the main diagram of von Neumann architecture. Von Neumann architecture और Harvard architecture में क्या फर्क है? So the difference is this one: memory और processor इसके अरेंजमेंट किस तरह होती है, ये von Neumann and Harvard architectures के डिफरेंस को हाईलाइट करते हैं. अच्छा, हार्वर्ड आर्किटेक्चर में क्या होता है? उसमें मेन मेमोरी दो हिस्सों में मेमोरी डिवाइड होती है. एक है प्रोग्राम मेमोरी जिसमें प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन मतलब होते हैं, और एक है डेटा मेमोरी जिसमें डेटा होते हैं. वॉन न्यूमन में ये दोनों मेमोरी एक जगह होती है. दिस इज द मेन डिफरेंस. So other devices, and this is the CPU. Harvard architecture is a computer architecture with separate storage and signal pathways for instruction and data. Instruction and data के लिए signal paths और storage अलग होती है. It contrasts with one Neumann architecture where program, instruction and data shared in the same memory and pathway. उसमें सेम बसेस और सेम मेमोरी इस्तेमाल होती है. और इसमें अच्छा, ये हार्वर्ड मार्क 1 जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ने ये प्रपोज किया था, वहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ है. Okay, let's look the main difference between the two. For example, this is one Neumann architecture and this is Harvard architecture. I just write N and H. So इसमें क्या होता है? CPU and main memory
के माबेन एक होता है डेटा बस और एक होता है एड्रेस बस। एड्रेस बस यूनी डायरेक्शनल होता है, एड्रेस बस, और डेटा बस डेटा मतलब दोनों डायरेक्शन में जाती है, मेन मेमोरी और सीपीयू। एड्रेस ये सिर्फ उधर एड्रेस भेजती है, इस एड्रेस से मुझे डेटा चाहिए मेन मेमोरी से। So the your address bus is unidirectional, which contains the address of the data, and the main data bus is two directional, so it is used for data movement towards CPU and toward the main memory. इधर हार्वर्ड आर्किटेक्चर में क्या होता है, the memory is divided into two types. One is the data memory, which contains the data. So there are two addresses. This is data address bus, and here is data memory bus. So data memory bus, sorry, data मेमोरी बस, यस। सो डेटा मेमोरी बस में क्या होता है, डेटा मेमोरी से डेटा सीपीयू को आती है और वापस जाती है, ये टू डायरेक्शन है और ये यूनी डायरेक्शन। इस तरह प्रोग्राम एड्रेस बस ये एड्रेस लेती है प्रोग्राम मेमोरी को, और प्रोग्राम डेटा बस ये प्रोग्राम को, प्रोग्राम मतलब इंस्ट्रक्शन डेटा जो इंस्ट्रक्शन मेमोरी या प्रोग्राम मेमोरी में होती है, इसके लिए ये बाई डायरेक्शनल बस है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू आर्किटेक्चर। I think it's not, there is no difficulties in this topic. It's very important in the basics of computer architecture. Okay, one न्यूमन आर्किटेक्चर में डिफरेंट रजिस्टर्स जो इस्तेमाल होते हैं। accumulator register store the results calculated by ALU arithmetic। जिस तरह हमने वन एड्रेस या वन ऑपरेंड एड्रेसिंग हमने पढ़ाया था, तो उसमें एक्यूमुलेटर हमने यूज़ किया था। तो एक्यूमुलेटर क्या होता है, ALU इस्तेमाल कर रहा है, एक रजिस्टर होता है। प्रोग्राम काउंटर को भी हमने पढ़ा था इंस्ट्रक्शन साइकिल में, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को कीप करता है। कीप्स ट्रैक ऑफ लोकेशन ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन to be dealt the program counter then passes the next address to the main memory address register। so memory address register क्या होता है, currently executing instruction stores the memory locations for data or instruction that needs to be fetched from the main memory or stored into the main memory। मतलब fetching के लिए जो instruction होता है वो memory address register में होता है। अच्छा, फिर होता है मेमोरी डेटा रजिस्टर और मेमोरी बफर रजिस्टर, MDR और MBR, ये भी हमने पढ़ा है। स्टोर्स डेटा और इंस्ट्रक्शन फिच्ड फ्रॉम मेमोरी और एनी डेटा दैट इज टू बी ट्रांसफर्ड एंड स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी। दोनों में फर्क क्या है, ये एड्रेस स्टोर करती है और ये एक्चुअल डेटा। ओके, और ये करंट एग्जीक्यूटिंग एड्रेस, इसको IR या कहते हैं, या CIR, it stores the most recently fetched instruction while it is waiting to be decoded and executed। so program counter से इधर IR में इंस्ट्रक्शन के लोडिंग को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम फिचिंग कहते हैं, फिच। ये हमने पढ़े प्रीवियस लेक्चर्स में।
Okay, memory हमने already पढ़ा. The computer memory is used to store same memory. मेन मेमोरी, ये मेमोरी है और ये सीपीयू है फॉर एग्जांपल. तो मेमोरी में डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दोनों इकट्ठे सेम मेमोरी इस्तेमाल होती है. कंसिस्ट ऑफ मिनी मेमोरी सेल स्टोरेज यूनिट्स, जिसमें होते हैं ऑफ फिक्स साइज. मेमोरी में क्या होता है, स्टोरेज यूनिट्स होते हैं मुख्तलिफ, जिसको डेटा प्रोसेसर एक्सेस कर सकता है बेस्ड ऑन their unique address. The two commonly used types of memory is RAM, random access memory, and secondary memory. RAM जो main memory होती है और secondary memory जो magnetic disk वगैरह होते हैं. Advantages: control unit gets data and instruction in the same way from one memory. It simplifies design and development of control unit. सेम बस है और सेम मेमोरी है, तो कंट्रोल यूनिट के लिए इसने काम आसान कर दिया है. डेटा फ्रॉम मेमोरी एंड फ्रॉम डिवाइसेस आर एक्सेस इन द सेम वे. अगर आईओ डिवाइस से है या मेमोरी से है, डेटा एक्सेस इसके सेम मैकेनिज्म होते हैं. मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन इज इन हैंड ऑफ प्रोग्रामर. प्रोग्राम कर सकता है कि मेमोरी को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर सके. डिसएडवांटेजेस की क्या है, सीरियल इंस्ट्रक्शन इसमें होते हैं, मतलब वन आफ्टर अनदर, पैरेलल, दो या दो से ज्यादा जिसमें पैरेलल एग्जीक्यूशन इसमें नहीं होते, सो इट इज स्लो. ओके, वन बस इज बॉटलनेक, अगेन इट इज स्लो. वन बस मतलब सेम बस इस्तेमाल होता है डेटा और इंस्ट्रक्शन के लिए, सो दिस इज स्लो. एंड इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन द सेम मेमोरी is data can be accidentally rewritten by an error in a program. Okay, I think this slide is repeated. Okay, memory. Next, memory weight means how many bits in each memory cell. वेट क्या है, मतलब एक लाइन में कितनी बिट्स आ सकते हैं, ये मेमोरी वेट कहते हैं. एड्रेस वेट, हाउ मेनी बिट्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट ईच एड्रेस. हर एड्रेस को कितने बिट्स से रिप्रेजेंट किया जा सकता है. द नंबर ऑफ यूनिकली आइडेंटिफाइड मेमोरी, और टोटल एड्रेसेस इसमें कितने हैं. सो फॉर एग्जाम्पल ये 0 1 2 3 अप टू 2 रेस्ट टू पावर n माइनस 1, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल ये 64 है, तो ये कब तक कहाँ जाएंगे, 63 तक जाएंगे, 0 से लेकर 63 तक. टोटल क्या है, 2 रेस्ट टू पावर n है. टोटल 2 रेस्ट टू पावर n है, वेयर n इज द नंबर ऑफ बिट्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट ईच एड्रेस. ये हमने पढ़ा था. फॉर एग्जांपल हमारे पास 64 मेमोरी एड्रेसेस है, तो हाउ मेनी बिट्स विल बी रिक्वायर्ड, 2 रेज़्ड टू द पावर 6, तो 6. Okay, in summary, we can say that one, Neumann architecture and Harvard architecture. It is ancient computer architecture based on store program concept. It is modern computer architecture based on hardware Mark 1. Same physical address is used for instruction as well as data, and here different for both. There are common buses for data and instruction transfer, और इधर डेटा के लिए अलग है और इंस्ट्रक्शन के लिए अलग है. One clock cycle are required to execute single instruction. An instruction executed, two clock cycles are required to execute an instruction, and here an instruction is executed in a single clock cycle. मतलब इस
quicker, and this is slow. Again, it is cheaper in cost, and this is cost. CPU cannot access instruction and rewrite at the same time. इसमें same time read write और access नहीं होती इसमें allow है. It is used in personal computer and small computer, ये जो आम यूज किए होते हैं. ये सिर्फ माइक्रो कंट्रोलर एंड सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं. Okay, thank you so much. So this was all about today's lectures. Today we have covered two topics. One is cache coherence. It's a previous lecture about 22 minutes, and this one is about 17 minutes. Yeah, on one Neumann and hardware architecture. If you have any question, please feel free to contact me. Allah Hafiz.